is Rishams in the year 2020. You are watching your favorite TV program around the globe. खुद रोज़गार हुआ कुछ इस तरह के मुझे कुछ अपनी निजी मसरूफियात की वजह से लंदन आना पड़ा और जिस तरह आप लोग मुझे मिस कर रहे थे मैं भी आप लोगों को मिस कर रहा था और आप लोगों के पुरसोर इसरार के ऊपर आज का प्रोग्राम मैंने मुख्तस किया है। खुद रोज़गार मैयत किसी भी घर से हो खा वो किसी भी नस्ल से हो किसी भी मज़हब से हो तो वहाँ की फ़ज़ा सोगवार हो जाती है, लेकिन अगर कोई मसीहा जिस मर्ज़ की तलाश में निकला हो और अगर उसकी डेथ हो जाए तो तकलीफ ज़्यादा होती है। Viewers, today we're going to discuss two topics. One is all about personal protection equipment, which is called as a PPE, and the second most hottest topic around the day is the vaccination, Pfizer and BioNTech. For discuss these topics, I've invited one of the renowned doctor from London Pennington Hospital. He's a director at the moment, Director Urgent Treatment Center, Dr. Asadi Khan. Assalamu alaikum. Welcome to my show. Khadr Hazrat, डॉक्टर साहब से जो पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो खौफनाक हालात जिसे सुनना चाह रहे थे और आज के प्रोग्राम जो मैंने बनाया है ये इसीलिए है कि ताकि लोगों को समझ आ सके कि जो पैरामेडिक स्टाफ है बनी नौ इंसान के लिए ये लोग निकले, इन्होंने लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात झेली है और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और आपके अहल खाना महफूज रहें। आप लोगों ने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है। मेरा पहला सवाल ये है, इन आसान अल्फाज में आप ये बताएं कि व्हाट इज PPE? थैंक यू। सबसे पहले प्रोग्राम में दावत का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे आपको मालूम है PPE जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसका जो एब्रीविएशन है। Right. तो नेसेसरली व्हाट दिस मींस इज ड्यू टू द पेंडेमिक और जो कोविड-19 वबा जो इस साल पूरी दुनिया में जो है वो ऑब्वियसली फैला हुआ है, तो उसके लिए हम जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो कैरियर्स है, क्लिनिकल स्टाफ है, वो अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट रख सकते हैं एट द सेम टाइम लुकिंग आफ्टर दीज पेशेंट्स। Right. तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है और गाइडलाइंस है जो So you're telling that this PPE has a different steps to follow and is a different guidance for this. Absolutely. Okay. So can you describe me a little bit about the guidance and the steps? I will do. Okay. So basically जिस तरह आपको मालूम है मास्क, जो मास्क है that is mandatory for everybody until and unless वो exempted हो इस चीज़। Right. ठीक है। तो मास्क तो पब्लिक के लिए as well as जो भी स्टाफ है, क्लिनिकल स्टाफ है या फिर हेल्थ केयर स्टाफ है, उनके लिए जो है वो मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने, Right. just to try and protect themselves as well as protect other people around them. Okay. तो ये तो आपका बेसिक हो गया। Now Right. coming to the PPE, Yeah. depending on the risk involved, which category of patients you're actually looking after or which category of for example in care homes, which category of the service users that you're looking after. So my question is, so the PPE, is it different to use in the hospitals and different to use by the nurses, or it is the same thing? No, it's the same thing, but there's different steps involved. Like I was explaining earlier, Yeah. that depending on the area where you're working in, depending on how much you would be exposed to these kind of patients, Right. it depends on that what PP you're gonna. So if the patient is a COVID patient, right, and on the ward when you enter in, so you're gonna wear the PPE, Yeah. and the nurses to follow, Yeah. and if the nurse is exposed to the COVID patient, he or she is wearing the same stuff. Yeah. So again, this comes under two tiers. Okay. One is whether you aren't carrying out any what we call aerosol generating procedures, and I'll come to that in a bit. Okay. AGPs जिसको हम बोलते हैं, Right. ठीक है? जो basic protection है, जो level 2 PPE है, Yeah. वो तो mandatory है staff के लिए, and that will include surgical masks जो होते हैं, ठीक Okay. है? और आपके जो disposable aprons है, disposable gloves है, Right. and ideally to use some goggles or what we call visors to protect the eyes, okay, from any kind of splashes. Right. ठीक है? The patients who need to have any what we call AGPs that I was explaining earlier, that is a little bit different. Any procedure that involves like exposure
to the airways or exposure to, for example, if we're intubating a patient, तो उसमें ये चांस ज़्यादा होता है कि एरोसोल जो ड्रॉपलेट्स है उनके जो है वो फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो उसके लिए फिर दो तरह के टायर्स है. एक तो वो है जो आप PPE पहनेंगे with what we called a more of a FFP3 masks. ठीक है. They are specialized for these kind of patients. Do you wear that? I haven't been wearing that because I'm not exposed as such to any AGP procedures. Okay. That's right. My next question, sir. The question came from the social media, right? We are in the era to live in the COVID, right? And it is along with us, right? And we just let it go, yeah? And we are living in. How can we adopt to live in COVID-19? I've done so many programs in Pakistan, and you must saw these programs, right? So what I'm asking is the question that came, and I researched it yesterday night. And the question came from social media. That's and we're walking down, right? So can we wear the PPE? Yeah. If we're wearing a normal casual clothes that we're walking down, and we are living in the COVID-19, what you can say, the era, can we just walk down the street and just wear the PPE on the top? I mean, it's a very good thought, but how realistic? Because the question came yesterday on the social media, so I thought to myself, I said, okay, it has to be answered. Absolutely. Because none of the media personnel have answered this question, and I thought, should I bring this question to you and give me your opinion on that? Absolutely. Yeah. So ideally, आप अगर देखें तो COVID-19 जिस तरह आप बता रहे, it's something that we're going to have to now live with for the unforeseeable future. Okay. So the main guidelines would be how we are going to protect ourselves and how we will be protecting the public. Okay. So first thing first, we've been asked to take several measures, and I think PPE, as much as how realistic is it that you'll see people wearing PPEs out in the streets or in the markets or visiting each other in each other's house? It's not realistic at all. Even with the masks, you can see it's a huge issue that a lot of people you'll see outside, they're wearing their mask, but they're not actually covering their mouths or their noses. They're just wearing the mask for the sake of it. Okay? And they're wearing the mask because this has been imposed on them. इसमें education बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Education as to why we are being asked to wear the masks. Why these guidelines have been published. They've been published. But the thing is, it is hard though. ख़वातीन हज़रात, जो सवाल मैंने डॉक्टर सजाद से पूछा है, वो सोशल मीडिया में कल मुझे आया, और उसके रात के पिछले पहले क्वेश्चन मुझे आया, और मैंने सोचा कि क्वेश्चन को राइज लाजमी किया जाए, क्योंकि ये एक आम शहरी का उसकी सोच है कि हम अगर PPE इतना इफेक्टिव है और हम लोग अगर कैजुअल बाहर निकले हुए तो हम PPE पहन के निकल चलते हैं, ठीक है. जैसा कभी बरसात में बारिश हो रही है और आप लोग बरसाती लेके बाहर निकलते हैं या जैकेट लेके निकलते हैं तो PPE पहन के चले. तो डॉक्टर साहब कह रहा है ये कि यार कि देखा ये गया है कि लोग मास्क पहन तो रहे हैं लेकिन उसको सही तरह कवर नहीं कर रहे. इट इज़ अ ब्रीथिंग डिजीज़, ये सांस की बीमारी है, और ये आपके नाक से भी थ्रू हो सकती है, आपके मुंह से भी हो सकती है, और कुछ ऐसी जरासीम जो आपके हाथ पे लगे या आपकी बॉडी में लगे. ये मुमकिन नहीं है. फ्लाइट मेरी लड़नी थी, और ये मेरा अपना मुशाहिदा है कि कम से कम 9 से 10 घंटे आप पाकिस्तान एयरपोर्ट से आप चले, आपने वहाँ मास्क पहना हुआ, आप फिर फ्लाइट में आपने मास्क पहना हुआ, और फिर जब उतरे आपने मास्क पहना हुआ, 9 से 10 घंटे. आप यकीन करें डॉक्टर साहब कि वो 9-10 घंटे, that was so difficult. So what I'm asking, I'm going to just, what you can say, relate to the next question, which is regarding the kids. It is very hard though. स्कूलों के अंदर बच्चे मास्क पहन के जा रहे हैं, ठीक है. कहा यह जाता था कि 5 साल तक बच्चों में ये नहीं होता, ऐसा ही है. लेकिन अभी जो सेकंड वेव आई है, जो रिसर्च ये बता रही है कि it is more getting common in kids. Is it true? It's getting more common in younger people, not kids per se, but younger generation. अगर आपने first wave के साथ इसको compare किया, अगर आप उसकी एज बता सकते हैं, किस एज से किस एज तक? I don't have the exact figures with me because I don't work in the pediatrics department. Right. However, there have been seen children in between 5 and 12 years of age, and, or 12 से फिर ऊपर जितने हैं, उनको लेकिन हमें ये ज़हन में रखना है कि उनके जो symptoms है, वो बहुत mild है, ठीक है ना? Luckily, there have not been many fatalities related to COVID-19 in children.
throughout the world, not alone in the UK, but throughout the world. Okay. So my next question, which is related to your staff. I believe around about 50 staff working underneath you, and you are the director. आप director हैं लंदन पेनिंगटन हॉस्पिटल, जो वन ऑफ द रिनाउंड हॉस्पिटल है, उसके अंदर डायरेक्टर अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर के, और लगभग 50 स्टाफ आपके नीचे काम कर रहा है. मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब पीपी हमने पहन लिया, ठीक है, आप एक्सपोज भी हो कोविड-19 पेशेंट से, लेकिन फिर भी उन पैरामेडिकल स्टाफ्स की डेथ्स हुई हैं. Or the PPE is being ignored? Give me answer in yes or no, and if it is yes, then give me detail, please. No. Achha. So they're not ignoring it. Not at all. So then why they got so many deaths in the paramedical staffs around the world? Dekhi, this is a very good question. The paramedic staff necessarily, they're the ambulance staff, isn't it? That's what we're talking about. No, I'm asking general. Okay. I mean asking So general. you mean the staff in the hospital? मैं बात कर रहा हूँ नर्सेस की, मैं बात कर रहा हूँ जी रिसेप्शन स्टाफ की, मैं बात कर रहा हूँ जी डॉक्टर्स की, मैं बात कर रहा हूँ जी सर्जन्स की, मैं हर उस तबके की बात कर रहा हूँ जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उसकी पूरी दुनिया के अंदर बहुत हुई हैं. अगर पीपीई था और हर मुल्क ने पीपीई की डिमांड होते हुए उसको एक्स्ट्रा मंगाया, मैंने कहीं भी पीपीई की शॉर्टेज नहीं देखी, ठीक है, लेकिन फिर भी डेथ्स हुई हैं, इसकी क्या वजह? It's a very good question again. Dekhi, we're living in an unprecedented world at the moment. Yes, we believe that, but लेकिन सर बात हुई आ रही कि डेथ्स जो हो रही है, अगर आप कह रहे हैं जी पीपी इज नॉट बीइंग इग्नोर्ड, फॉलो किया जा रहा है, फिर डेथ्स किस होंगे? Absolutely, I'm coming to that point. Okay. So we are living in an unprecedented world and we're learning every day. You've seen, आपसे बेहतर आपने कई प्रोग्राम इस टॉपिक पे किए हैं और आपको पता है कि day by day things are changing. Right. And new guidelines are. We are learning as we're getting on. Okay. There's nothing set in stone to fight this virus, but scientific research जो है और जो Public Health England के guidelines है, NHS England के जो guidelines है, जो अगर आपको याद हो जो when it was the first lockdown, तो रोजाना evening में along with the Prime Minister you would get the scientific advisor as well as the NHS Right. England head, because every single day there was something changing. Right. Now the answer to your question about the deaths is it's a difficult one. We wouldn't be able to know the answer for now exactly. However, what I can say. अच्छा फिर क्वेश्चन एक और देखने आता है खातिर हज़रात कि अगर पीपीई पहना है मसीहा ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, और वो निकले हुए हैं, वो काम पे भी आ रहे हैं और उनको सिम्टम्स भी नहीं थे, फिर भी उनकी डेथ्स हुई हैं. देखें अब एक बंदा डेली जा रहा है, ही और शी और जाकर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, घर वापस भी आ रहे हैं, सिम्टम्स उनको है नहीं है, और अचानक इनकी बॉडी ऐसी हुई है, दे गॉट डाइड. Because I've seen so many doctors in Pakistan, back in Pakistan, because you must saw my interview with the Dr. Mukhtar, I did. which is the Vice Chancellor of National Skills University. He got expertise in biosafety level 3. मैंने उनसे 2 प्रोग्राम किए और आप यकीन करें खुदारा भी कह रहे थे कि बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब्स में उन्होंने अमेरिका में काम किया, अमेरिका में, ठीक है, और उन्होंने कहा कि यार जो लैब लेवल 3 की जो लैब्स है ना, he worked way back 20 years there. कह रहे कि these people were standard like थे. अब मुझे ये बताया कि 1 लाख बंदा अमेरिका में मर गया, 50,000 यूके में मर गया, तो I mean how can you cope with that? Absolutely. देखिए जी, शुरू में आपको पता है जब ये पेंडेमिक in early this year, February March में शुरू हुआ था, तो it took them a long time to get these tests organized. ठीक है ना, टेस्ट अगर आप देखें तो अभी recently शुरू हुए हैं, तो initially तो ये प्रॉब्लम था, और जब से ये टेस्ट एंड ट्रेस का सिस्टम शुरू हुआ है, एक तो आपने डेथ रेट्स में डेफिनेटली कमी देखी है, still there, but the way things were going right in the beginning. Right. So viewers, we're going for the short break. जहाँ से अभी सिलसिला अभी हमारा मुद्दा हो रहा है, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, इस पीपीई के बारे में दोबारा बात करूँगा. So stay tuned, don't go away. Take a break. Welcome back viewers. Viewers, we're going to discuss again the PPE, और जो चीज़ मैंने डॉक्टर साजिद खान साहब से पूछी, सदा खान साहब से पूछी है, जो डायरेक्टर अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर के हैं, सर मुझे ये बताएं कि बात नहीं पर आ गई कि पाकिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया की इंसानियत को जो ये नादानी आफत आई हुई जिसे कहते हैं, इससे सबको महफूज रखे, और जो चले गए हैं अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमने लॉकडाउन किया, एंड देन वी वेंट टू द स्मार्ट लॉकडाउन, और एज कम्पेयर टू द यूके टुडे फिगर,
It's 50,000 in United Kingdom and 6,000 in Pakistan, right? So the huge difference. बात लोग कर रहे हैं जी इम्यून सिस्टम ठीक होना चाहिए. डॉक्टर साहब मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो हट्टे कट्टे थे, 16 का उनका बाइसेप था, ठीक है, 40 की छाती उनकी, ये चौड़े लंबे चौड़े, लेकिन दे एक्सपायर्ड इन विद इन डेज, राइट. वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने असं खुराक बड़ी खादी है, देसी घ्यो खाता असी जनाब, वी आर वो चिकन से साढ़ा मिसल बड़ा ठीक है. खुदा साहब ये मैं कहना चाहूँगा कि ये तासुर बहुत गलत है कि आप लोगों की बॉडी ठीक है, आप लोगों का इम्यून सिस्टम ठीक है, लेकिन ये खुदारा ये सांस की बीमारी है. इसके अंदर आपकी बॉडी जितनी मर्जी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, इसका कोई लेना देना नहीं है. मेरी हिसाब से मेरा से आपसे ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है कि इम्यून सिस्टम आपका ठीक हो तो आप बचेंगे. देखें, एंड हाउ कैन यू बिल्ड दैट? एब्सोल्युटली, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है. जहाँ तक बचने की बात है तो आपको भी पता है, मुसलमान होने के नाते हमारा तो ये ईमान है कि जो डेथ जिस दिन लिखी हुई है वो तो लिखी हुई है, ठीक है, और ये सब असबाब जो है वो सारे बहाने बनते हैं जिस किस्म के भी है. बट व्हाट आई एज अ डॉक्टर व्हाट आई कांट से इज इट्स अ पेंडेमिक. अगर जिसका टाइम पूरा होगा वो बस इससे मर जाएगा और हम इसके लिए कुछ करे भी ना और ना अपनी प्रोटेक्शन करे. इम्यून सिस्टम सिर्फ इस बीमारी के लिए नहीं, जो भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां, स्पेशली वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है, उनके लिए तो इम्यून सिस्टम आपके बॉडी का वो जो हम कुव्वत मुदाफ़ियत जिसको कहते हैं कि अगर आप पे कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो आपके जिस्म की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो उसको फाइट ऑफ कर सके या ना कर सके. तो वो एक निस्बतन एक बंदा जिसमें कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, रिलेटिवली वो यंग. I mean, you talk about the chronic diseases. Absolutely. जिस तरह आपने अभी फिटनेस की बात की है, जिसमें आपने एक जिम फिट बंदे की बात की, within days you know they have died. This is the reality of this virus. In some people, there will be really mild symptoms. In others, there will be no symptoms at all. Again, I'm going to cut you here. यही चीज मैं आना चाह रहा था. एक डॉक्टर घर से चलता है, पेशेंट को साथ एक्सपोज होता है, ट्रीट करता है, he came home. अगले दिन जाता है, ऐसा ही होता है, सिम्टम्स नहीं आ रहे, तीसरे दिन his breathing level go down and he go died. ये सब मैं कहना चाहूँगा कि पीपी आपने कर लिया है, फिर भी आप कैसे कर दोगे? क्योंकि देखें, PPE is not guaranteed. It's a protection. It's not a guarantee. Again, we come back to the. Do you think that the WHO World Health Organization has to work on it? I think this is a big dilemma. क्योंकि आपको पता है कि जब 26 फरवरी को पाकिस्तान में जब आना शुरू करना हुआ, and I was in Pakistan that time. आप यकीन करें कि मैंने बरहा प्रोग्राम उस पर किए और मैंने खुद से दोबारा कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इतने साल पेंसिलिन आई, अगर आप उसको देखें उन्होंने उस टाइम काम किया, फिर स्पेनिश फ्लू that was 1920 something, believe it. Then SARS-1 came in 2000 back in 2003 and then SARS-2. वो हम asking है इसके क्या जब आपके सर पे पड़ती तो आपने काम करने. WHO was in a backdrop. I think he couldn't do much. I believe they did more, but we need an extra mile for this. अगर PPE इतना effective नहीं है तो इनके साथ कुछ extra measures इनको होने चाहिए. Do you think that? Absolutely. Have you done the meetings in that? Absolutely, we have meetings, but again, remember, we come back to the early discussion as soon as we started this program. Yeah. This is something totally new to the world. We're just going with trials with everything. But also, it has been now 7-8 months now. Absolutely. And we got 50,000 fatalities. Absolutely. It's 7-8 months, but still there's no cure for it. Okay. We all agree on that. The world, topmost scientific laboratories in the world have been, and now I know that you will later on be talking about definitely. Vaccination and stuff, but at least there's some hope now. Okay. Yeah. But in the beginning, this was something totally new to the whole world. Obviously, hope says the word. Yeah. That's no doubt in that. Yeah. But as you said earlier, it's a remedy, right? And it's what you can say is a protection, right? But my question is how effective it is. You can just minimize to some extent, but still the danger is still there. Yeah. And then what are we doing to try and combat the danger? Yeah. This is where we need to be following these basic guidelines, which are the social distancing, not unnecessarily going and meeting people for this. अगर आप देखें, अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं, during the pandemic, आप देखें जो इस मुल्क में जितनी Asian communities जहाँ पे रहते हैं, have they been actually hands on heart religiously been following those guidelines?
The answer is no. That's Okay? right. Or that contributes to the deaths. I'm not saying that there wouldn't have been any deaths had they followed the guidelines, but definitely they would have minimized them. Right. My next question, sir. It's a tough though, right? With regards to your emotions, how do you cope during this pandemic time? And I believe your family is, alhamdulillah, has been okay, doing well though, as well as you. Your staff, like around about 50 people working underneath you, has been any deaths in your staff? No. Luckily, not immediately in my staff. There have been people that I know that have died, but not in my immediate staff. There were a few doctors and nurses who did contract, unfortunately, the virus, but their symptoms were mild and they luckily pulled through. Right. So the next hottest topic nowadays. Today, the hashtag tree met Hancock. ख्वातीन हज़रात, आज जो वज़ारत सेहत के थे मैट हैंकॉक, उन्होंने ऐलान किया है कि फाइजर एंड बायोएनटेक की जो वैक्सीनेशन तरसील है, क्योंकि अब नवंबर का बिल्कुल एंड लगा हुआ है, तो दिसंबर के अंदर की तरसील शुरू हो जाएगी और उसकी वैक्सीनेशंस का अमल स्टार्ट हो जाएगा. डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये दो कंपनीज हैं कितनी इफेक्टिव हैं? मेरे ख्याल से क्वेश्चन वे बैक बहुत जल्दी मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग में स्टिल इट्स स्टिल व्हिच यू कैन से इन अ डायलेमा. एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ अफेक्ट और इसका प्रोसीजर पूछेंगे कि इसको लगाना किस तरह है और इसके बाद इसका सा होगा क्या, और जो प्रोग्राम आगे चलता जाएगा तो हम इसकी अफादियत के बारे में पता करेंगे कि अगर ये उम्मीद की किरण जागी है तो इसका अख्ताम भी अच्छा होना चाहिए. जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? That's a very good point, and this is like hot in the press, breaking news है. That's right. जो जैसे आपने फरमाया, Pfizer and BioNTech जो है, one of the renowned pharmaceutical companies in the world, they have announced and published recently that the trials, जो भी वैक्सीन होता है उसके जो नया वैक्सीन इजाद होता है तो वो ट्रायल फेजेस पे जाता है. It goes in trial 1 and then trial 2. और trial 3 इसका जो final phase होता है, which they are then near to kind of getting it out to the public. So last week they just came with a breakthrough that they feel that a vaccine that they have now brought into the into the world. What's in your mind? Well, we wouldn't know that. I know. If I ask you that, okay, Dr. Sajjad, go out there, test it, go ahead and have a vaccine, right? Would you go straight away? Well, I'm going to have to go straight away because I work in the front line. Why? So why you go to the straight line? Yes. You don't know the outcomes of this. We don't, but obviously these vaccines don't come out. So it's like a jump in a well. It's not at all a jump in a well. How are you saying that? These vaccines it's not like someone just produced a vaccine and it's come out now. What I'm saying is this, because there's so many medicines around the world, right? If I go to the pharmacy, if I'm allergic to something else, right? If I don't take the vaccine, how could you trust that this vaccination that's going to affect my other stuff of my part of the body? Okay, so like I said, the vaccine is literally in its trial 3, okay, and they have used this on about 41,000 volunteers in the world. Okay, 41,000 is a big number. Now I'm not saying that the 41,000. इसका मतलब लोगों का दिल बहुत बड़ा है. उन लोगों ने ट्रायल करवा लिया. देखिए जी, होप अब और हमारे पास चारा क्या है और है क्या चारा? We are in the world day and night they are trying to bring some vaccination out, not to cure this, but to obviously develop some immunity. सर मानने की बात आ गई कि ठीक है, जब फर्स्ट के आपकी गाड़ी कोई खराब होती है and you are in the middle of the long road and it's nobody going to help it, right? So आपको कुछ ऐसी चीजें कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंच जाए. Fair enough, the vaccination has been come through and everything is done, but it is liable कि आप उसको भी अपने लगा दिया है, because as they said that's the after what you can say shock or the side effects after 6 months उसका पता नहीं चलेगा. Absolutely. तो is a risk there? There is a risk and there always will be. Yeah, that's my asking. But we have to mitigate the risk. Okay. The risk of not having vaccine is much higher than the risk of having a vaccine that will have some mild side effects. Right. Now the literature shows that the side effects
were very minimal in this 41,000 people that they tried it in, और जो side effects mainly थे वो या headache या fatigue in 2%. Okay, so that is like, for me, that is very reassuring. What's going to happen tomorrow, we don't know. We'll only find out the outcome once it's out and once we've started. Right, I'll shortlist some, what you can say, the medicines which were used in Pakistan, and I need to compare with that, what's going on here. और because रात जो प्रोग्राम्स में कोरोना में करता रहा और आप लोगों को तो अज़बरे हो गए होंगे याद, आपकी फलाह व बहबूद के लिए थे ये डेक्सामेथासोन मार्केट में पता चला डेक्सामेथासोन बड़ी इफेक्टिव है. डॉक्टर साहब 4 रुपये का इंजेक्शन था, इस पर मैंने प्रोग्राम किया. 1 लाख गुजरने के बाद अगले दिन पूरे शहर के अंदर वो डेक्सामेथासोन 4 इंजेक्शन 400 रुपये का हो गया और मेरी नहीं रहा था. अच्छा, एक वो रेमेडी थी. फिर सर एक्टिमिफायर इंजेक्शन, अच्छा उसकी कीमत बढ़ गई. खैर ये 2 चीज़ें वहाँ चलना शुरू हुई, कोई शक नहीं इसमें, उस लोगों से क्या होना शुरू हुए. पैराडोल बहुत चली और हर बंदा वो क्या कहते हैं नीम हकीम बना हुआ था कि पैराडोल खा लो काम ठीक हो गया. आपको ही पता है कि पैराडोल इज जस्ट क्विक रिलीफ बट इट्स नॉट द परमानेंट स्टफ. यू नो ठीक है. अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वैक्सीनेशन हम नहीं लगवाते हैं और हमारे सिम्टम्स भी होना शुरू हो जाते हैं, would you prefer कि if the person don't want to go to hospital and he can, I mean he's a good fit in health, he just take a Panadol and live with the life with this, and if after 6 months when the vaccination has come to results और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे तो फिर वो वैक्सीन लगवाने जाए. देखिए जी, पेनाडोल जो है, I partially agree with you, but I'm not totally agreeing with you. Panadol is symptomatic treatment. It's not to cure any COVID-19 at all. It's there just to help with body aches, to help with high fever. क्या बुखार लग रहा है? So symptomatic treatment. Equally, dexamethasone is a steroid that we use in any breathing disorders. Asthma के बाद ये बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? COPD जिसको हम बोलते हैं उसमें इस्तेमाल होता है. We used to have a dexamethasone all the time. Absolutely. So this is for symptomatic treatment. ठीक है. It's not the cure. Okay? There's no such thing as the cure. So the risk you'll have with the patient believing that if I take Panadol or if I take dexamethasone and I wait for 6 months. सर मैं आपके पास एग्री करता हूँ कि ठीक है पैराडोल वही मैंने आपको पहले बोला कि वो टेम्पररी है सिर्फ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बंदा डायलेमा में है, अगर वो ओल्ड एज में है और उसको डायबिटीज भी है, उसको ब्लड प्रेशर का भी इशू है, वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाह रहा, 6 महीने वो बर्दाश्त कर सकता है. 6 महीने में अगर वो डिटीरिएट कर दे तो मैं एक्सपोज करूँ ना, अगर 6 महीने के अंदर उसको कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं है और कोविड भी नहीं है एंड ही टेस्टेड एंड ही गॉट नेगेटिव, 6 महीने के बाद अगर वो चाहता है कि यार ठीक है अब लोगों के रिजल्ट ठीक आ गए हैं और मैं लाइफ गुजार सकता हूँ, I think he should wait for 6 months and then he could do vaccination. It's going to depend on the outcome of the initial phases of these vaccinations. Obviously, it's going to depend on how people will react to the vaccinations. What kind of side effects will there be there? What's the safety profile around it? तो बहुत सारे factors को मद्देनजर रखते हुए ही ये vaccination लोगों को offer किया. Right. So vaccination is a remedy. ठीक है. But how effective it would be? You still don't know, right? No. अभी किसी को पता नहीं है. लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर पैरामेडिकल स्टाफ जिनको पहले कहा गया कि पहले इनकम टेस्ट किए जाएंगे NHS के थ्रू, राइट, ऑब्वियसली इज द पीपल. अच्छा अब मुझे सर बेगा क्या कहा जा रहा है, ठीक है, and I'll come to that on definitely on this one कि इसको हम यहीं से आगे जोड़ते हैं. खुद अभी हमें छोटी सी ब्रेक लेने पे जाना है. डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड. Welcome back viewers. Viewers, we discuss about the PPE and vaccination. मेरा अगला सवाल डॉक्टर सज्जाद से ये है कि वैक्सीनेशन का प्रोसीजर क्या होगा और इसकी जो टाइमलाइन है वो कब से स्टार्ट होने वाली है. जी सर. अच्छा सवाल है आपका. तो जो UK गवर्नमेंट है, for now they've ordered 40 million वैक्सीन, ठीक है. वो फेजेस में जो है वो आएंगे. द फर्स्ट बैच शुड बी अराइविंग बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है ना. एंड देन दे आर गोइंग टू फेज आउट कि किन को ये प्रायोरिटाइज करेंगे कि किन को पहले ऑफर होगा लगाने का और किन को बाद में. तो जो एल्डरली ग्रुप है, जो क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, जिनके पास कोमोर्बिडिटीज है, जो इम्यूनोसप्रेस्ड है ज़्यादातर लोग, फॉर एग्जांपल जो
कैंसर वाले पेशेंट्स होंगे या पेशेंट्स who are on medications that can cause immunosuppression, उनके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो कम होती है। और फिर हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, उसमें नर्सेज, डॉक्टर्स। अच्छा, आप लोगों को पहले लगेगा? No, पहले नहीं लगेगा, it's going to be phases, so probably it'll be more or less the same time, लेकिन ये first जो priority वाली category है उसमें elderly patients, patients with comorbidities, health care workers, carers जो कि nursing homes वगैरह में especially elderly people के साथ काम कर रहे हैं, उनको ये पहले लगेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता next year there's, I don't know the exact figure now, but there's millions that have been ordered for next year by the end of 2021. और फिर ये phase out करेंगे and it will come. डॉक्टर साहब, आप सोच सकते हैं कि जो pregnant women होती हैं, मैंने डॉक्टर राबिया पाकिस्तान के one of the broad doctor हैं from CDA hospital, मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया मैंने, and she is a gynecologist. उनसे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, ख़वातीन हज़रात को काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ उनकी मालूमात से। अब जो वैक्सीनेशन लगेगी, pregnant women जो है उनको तो उससे फ़ायदा होगा, और जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं obviously they will be cured, right, and they got protection. आप सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि क्या ये चीज़ ब्रॉडर सेंस में अगर इसको देखा जाए तो अगर वैक्सीनेशन साथ में मेडिसिन भी अगर साथ हो जाए तो क्या ये चीज़ फैक्टर नहीं होगी? Absolutely. और लाइक देखें, अभी जो डायबिटीज पेशेंट है वो इंसुलिन भी लेता है और वो मेडिसिन भी लेता है, कुछ ऐसे जो खाली इंसुलिन देते हैं, कुछ जो है वो खाली मेडिसिन देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वैक्सीनेशन के अलावा अगर मेडिसिन पे भी काम अगर हो रहा हो, इस बारे में कुछ है नॉलेज आपके पास? तो नॉलेज यही है कि जिस तरह शुरू में मैंने कहा है कि वैक्सीनेशन भी इट्स इन द ट्रायल, इजंट इट? अभी हमें ट्रायल्स के जरिए तो पता चल रहा है कि दे आर सेइंग 90% it protects people. It doesn't cure people, it protects people. जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो तो वही है जिस तरह आपने खुद अर्ज किया अर्लियर ऑन, डेक्सामेथासोन के बारे में, पैनाडोल के बारे में, और जितने कई अद्वियात है जो कि आपके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन वैक्सीनेशन पे बात आके ख़त्म नहीं होती। ऑब्वियसली रिसर्च अभी भी जारी है टू फाइंड अ क्योर फॉर इट। Whether that cure will come in the near future or not, time will tell. Pros and cons would be there, right? And how hopeful you are, the pros are more than the cons. As a medic, I'm very optimistic, especially with these trials. Okay. Honestly speaking, I haven't read the whole papers that have been published. ठीक है, लेकिन कोई मार्केट में रेगुलेशंस होती है, जब कोई मेडिसिन आता है तो वो काफ़ी सारे ट्रायल से गुजर के और उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ही वो उसको फिर वो लाइसेंस जारी होता है कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक। तो we'll only be able to tell with time. If you got a chance to go in Pakistan and treat the people, would you prefer to go? Absolutely, I would. Right. And which expertise do you think that it can be effective? ख़वातीन हज़रात, जो चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि अगर यूके के अंदर वैक्सीनेशन की तरसीद स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द दिसंबर के अंदर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ इस तरह की एक्सपर्ट टीम, मैं पाकिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री से कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे फ्रंट एंड पे काम किया और जो की वर्कर्स थे, इन लोगों को अगर ये बुलाया जाए पाकिस्तान के अंदर और इनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि 50,000 डेथ्स यहाँ हो चुकी है। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स के सिम्टम्स और उनकी जो कॉम्प्लिकेशन को देख लिया हुआ है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो ये स्टाफ है, जो ये मसीहा हैं, जो लोग मर्ज की तलाश में निकले हुए हैं, इन लोगों को सराहें। Please appreciate that. The appreciation letter is not enough. You have to respect this community from wholeheartedly, deeply and truthfully. डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना क्वेश्चन ये है अगला जो and it's a vital question for this. हम सबको पता है कि it is a breathing disease, ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे सोशल मीडिया पे आया और and it's again a very good question to ask in front of you. What I'm asking is, why I'm asking this question because हम सोचते हैं जी ये lungs को perfect करता है और जो lungs का damage हो जाता है और वो permanent damage करता है, ऐसा ही है। Apart from lungs, कौन सा ऐसा और कौन सा hub area है जहाँ ये affect कर सकता है? It's a very very good question. So apart predominantly it is a respiratory tract disease, जिस तरह आपको पता है. However, there's a few things
that are outside this, that even some patients are totally asymptomatic, उनको कोई symptoms नहीं है, और अगर वो test के लिए जाए तो उनका test positive होता है, Right. which means some patients are carrying a silent virus, कि वो कोई तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो है वो loss of sense of taste or smell, कि उनको और कोई symptom नहीं है, ना उनको खांसी है, ना उनको बुखार है, लेकिन वो जो है वो खाने का टेस्ट बिल्कुल और smell का भी नहीं है। I've been told कि कुछ लोग तो इस तरह के उन्होंने hot chilies खाई हैं और उनको वो भी बिल्कुल feel नहीं हुई, ठीक है ना। अच्छा मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जो symptoms हैं पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ भी वही चीजें हैं, आपकी सूंघने और चखने की आपकी हिस्स खत्म हो जाती है, आपके सर में दर्द रहता है, आपको बुखार होता है और बुखार वक्त वक्त चढ़ता रहता है, ये चीजें, और इसका मतलब ये चीजें कॉमन है, इंग्लैंड में भी दिखाई नजर आई है और पाकिस्तान में, सो दैट मींस के वायरस स्टिल देयर, जो लोगों को दिमाग में चीज लीजिए कोरोना शोना कोई नहीं, लेकिन वो है, क्योंकि जब आपकी अपनी कम्युनिटी का इर्द गिर्द देखते हैं जो लोगों की डेथ होना शुरू हो रही है, फिर आप समझते हैं कि दैट्स यू रियलाइज दैट इट्स स्टिल देयर। सर बैक टू द क्वेश्चन, लंग्स के अलावा कौन सी ऐसी बॉडी का हब है जहाँ ये अटैक कर सकता है? किडनीज पे भी करता है, ठीक है ना, तो आपका जो है वो किडनीज भी इससे अफेक्टेड है। Research is going on how much it's affecting the heart and the liver as well. लेकिन it's causing multiple symptoms. Predominantly it is the respiratory tract, ठीक है ना, लेकिन वो कुछ respiratory tract में इस तरह के भी कि clotting का भी कुछ है कि वो microclots बना देते हैं। क्लॉट भी बाकी होती है। Absolutely. So क्लॉट भी होता है, आपको बुखार भी तेज चढ़ता है वक्तन वक्तन, आपको सोचने समझने की होती है, Continuous खांसी होती है। कंटिन्यूस खांसी होती है। अच्छा ये सिम्टम्स मैं देख चुका हूँ, ये सिम्टम्स मैं देख चुका हूँ। तो अब आपने जो नई चीज मुझे आपने बताई वो ये कि किडनी को भी ये करता है, किडनी को भी करता है। जीआई सिम्टम्स कुछ लोगों के होते हैं, सर जीआई सिम्टम्स क्या है? जीआई सिम्टम्स उसमें जो है डायरिया है, हाँ डायरी भी देख लिया मैंने, 5 से कुछ पेशेंट्स में ये भी है, ठीक है, कुछ पेशेंट्स में तो कुछ भी नहीं है, जिसमें का वो फिर भी जो है वो पॉजिटिव, राइट। तो अगेन और कमर दर्द सर, वो जिस्म दर्द में आ जाते हैं जिसको मायल्जिया बोलते हैं, कि आपके पूरे जिस्म में, नेसेसरली नॉट जस्ट द बैक, लेकिन आपके पूरे जिस्म में दर्द, जिस्म टूट रहा होता है। अच्छा सर, और ये जो एक और सिम्टम है जो ज्यादातर पाकिस्तान में देखा गया, आंखों में चुभन जो होती है, वो अक्सर ऐड चलते थे वहाँ पर, उसमें कहता है कि आपने हाथ मुंह धोए और जब आप वापस आते हैं तो उसको 20 सेकंड्स की आप धोएं और आंखों में ना मलें। आंखों वाली जो थी, जो चुभने वाली थी, वो मैंने ज्यादा कॉमन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपने सिम्टम्स देखे आंखों में चुभन वाली, खारिश? बहुत कम देखी है लेकिन है। अच्छा है, it is still, and that patient recovered or it just recovered? अच्छा ठीक है, that's fine। डॉक्टर साहब आपसे मेरा अगला सवाल, आपकी कुछ सजेशन स्टाफ के लिए, एक तो यहाँ पर जो आप देंगे खुद आपके लिए, दूसरा ये कि जो आपकी एक्सपर्टीज है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, अगर आपको कहा जाए कि आप आए और हमें अपनी एक्सपर्टीज दें, इनोवेशन या इनोवेटिव चीज़ अपार्ट फ्रॉम जो चीज़ें हम वहाँ पर चल रही हैं उससे पेशेंट रिकवर भी कर रहे हैं, और जो सिम्टम्स आपने बताया ये भी मॉडल सारे वहीं पर वो भी वही है। हमने एक चीज़ फाइंड कर लीजिए, कोविड चल रहा है, ठीक हो गया, सेकंड वेव इज मोर इंटेंसिव, क्या ऐसी एक्सपर्टीज है आपकी जो सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर अच्छी है वहाँ पर मैं आगे दे सकता हूँ? बहुत अच्छी बात आपने की, और इसके लिए हमारे एक टीम, जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, लेकिन हमारे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स थ्रू आउट द कंट्री, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और वो पाकिस्तान के पेशेंट्स के लिए जिनको भी एडवाइस रिलेटेड टू कोविड-19 चाहिए था, ठीक है ना, वो ज़्यादातर कराची से है क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी कराची से है, तो उन्होंने उसके लिए एक हॉटलाइन बनाया था, और उन्होंने आपस में जो है वो शिफ्ट्स यहाँ पे totally fi sabilillah, they weren't getting any incentives for it, they were just trying to help out the patients in Pakistan, and they were sharing all the protocols from here and the treatments that we are following here with those patients there. Right, and what are the suggestions for you for the staff here? So again, all the staff are very well aware about how to use PPE and how to protect themselves, और अगर symptoms हो तो क्या करना है, आपने जो है वो isolate करना है, आपने test कराना है, आपने इर्द गिर्द वालों को isolate करना है, लेकिन I think a very big impact रिशाद साहब जो इस virus का हुआ है in the last 9-10 months is psychological disturbance. Life is not normal at the moment for anyone, ठीक है, और जो frontline staff है, they have been working non-stop from February to now without taking any holidays, without doing the normal things that they would have liked doing.
स्टाफ की कमी है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट होता है तो उसके इर्द गिर्द वालों को आइसोलेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक टू ट्राई एंड फोकस ऑन आवर मेंटल हेल्थ, क्योंकि इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशन जो है वो मेंटल हेल्थ पे और साइकोलॉजिकल इंसान पे होता है। तो आई थिंक टू मेक श्योर दैट वी डोंट लेट थिंग्स गेट ऑन टॉप ऑफ अस। अच्छा, अब मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है, तो हम अपने चीज़ को अगर हम कंक्लूड करें 1 2 3 पे, आप चाहते हैं कि पीपीई को और इफेक्टिव किया जाए, इसको बेटर किया जाए। नंबर 1, वैक्सीनेशन को लगवाया जाए, और अगर कुछ और चीज़ नहीं मिलती तो कम से कम वैक्सीनेशन आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन एटलीस्ट आपको होप तो दे रही है। 2 ही हो गई। तीसरा ये हो गया कि अगर एक्सपर्टीज आपकी है और जो यहाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और आप पाकिस्तान अगर जाते हैं तो पाकिस्तान अगर आपसे बात देना चाहे तो आप इसको आप करना चाहेंगे, ठीक है, एंड इनोवेटिव आइडियाज जी थी। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे सोचना चाहूँगा ये चीज़ कि खुदा ना कि अगर ये सेकंड वेव वर्स्ट हो जाती है, ठीक है, इसके लिए यूके गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मेजर्स क्या किए हैं? जी, तो जैसे आपको मालूम है कि एट द मोमेंट वी आर अंडर द रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉकडाउन, ठीक है। It's not as intense as it was previously, लेकिन जो साइंटिफिक एडवाइजर्स है वही गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवाइस करते हैं और वो उस पे जो है अमल दरामद करते हैं। I think we should be prepared to live with this virus till we actually find the cure, and the vaccine is not the cure, remember, it's to try and protect us against it. Okay. तो जो Public Health England के guidelines हैं उनको seriously लें, they are not just there for the sake of it, वो scientific evidence के background पे वो guidelines issue होती हैं। हम जितने हद तक हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करें और फिर अपने इर्द गिर्द वाले को, अपने चाहने वालों को, अपने लव वालों को जो है वो हम प्रोटेक्ट करें। और वो हम कैसे करेंगे? टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। राइट। ख़वातीन और हज़रात, मैं आप लोगों से बार बार कहता रहा हूँ और अभी कह रहा हूँ कि इस कोविड-19 की जो सेकंड वेव है ये मोर इंटेंसिव है अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेव। वैक्सीनेशन बहुत जल्द आने वाली है, 1-1.5 हफ्ते की बात रह गई है, इसकी तफसील शुरू हो जाएगी। यूके गवर्नमेंट इज़ फुल इक्विपमेंट विद द कॉन्सिक्वेंसेस, और किस तरह इसको लगाना है, कौन कौन इसको लगवाएगा और किस तरह चीज़ें आगे चलेंगी। पाकिस्तान में भी चीज़ बहुत जल्द पहुंचने वाली है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि ये चीज़ हम नहीं लगवाते और अगर 6 महीने के बाद आपकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, खुदा ना खास्ता आपके करीबी चाहने वालों की किसी की मौत हो जाती है, तो बेहतर ये है कि इस चीज़ को अपने करीबी डॉक्टर से रजू करके इस चीज़ के ऊपर अमल करें। मैं आप लोगों के साथ वक्तन दोबारा लंदन से प्रोग्राम करूँगा और आप लोगों के जो सवालात हैं कोरोना के हवाले से, इसके बारे में बात होगी और जो इशू हमारे चल रहे हैं उसके हवाले से बात होगी। जी, और सब कुछ कहना चाहेंगे इनमें? बस यही कहना चाहूँगा सबको कि अपना ख्याल रखें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, जितनी हद तक हो सके तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और अपने चाहने वालों को। Right. So the viewers, that was the show. Thanks for this wonderful, which you can say, the vital stuff you gave us, and so we described the whole world. अपने और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। Stay safe, Pakistan. Long live Pakistan. Rich Shams signing off.